Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I really apologize for being late today. Our today's topic is general physical examination. As the word denotes, general. General physical examination, usually we people don't concentrate on this examination, while the main clue for the diagnosis is in the general physical examination. General physical examination starts when the patient enters into your clinic. If you are doing round of the ward, then your physical examination starts when you go towards the bed of the patient. In the case of indoor, first of all, you have to look at surrounding of the patient. Is there any walking stick? Or any spit box? Any clue around the patient can tell you something about the diagnosis as well. And there is no hard and fast rule that you have to start the general physical examination from any part of the body. You can develop your own. If you want to start from the hand and then you can go up to the head and then to the feet. If you want to start from the feet as well, some people they want to start from the head and neck and then goes to the periphery like hands and feet. Any system you can adapt according to your own criteria. You can develop the criteria that you are easy in your own way you can do it. Common knowledge says that doctors should be observant like a detective. So look at the patient's general appearance, at the face, hands and the body. Regarding the systemic examination, then there are 5 steps: inspection, palpation, percussion, auscultation, and the assessment of the function also. So the first impression, you should have to decide how sick is your patient first. Is he or she well? Sitting up or talking, or totally not aware of his or her surroundings. After a general look at the patient, then you should take the vital signs first. Vital signs is, we know that the pulse, blood pressure, temperature, respiratory rate, they should be assessed immediately once we discover that our patients are unwell. They provide important basic physiological information. Then, weight of the patient, height of the patient should be done, and the BMI should be calculated. The BMI is calculated by weight in kg divided by height in meters square. And normal BMI is from 18 to 25. Less than 18 is underweight. From 25 to 30 is overweight. More than 30 is obese. And more than 40 is morbid obese. Any wasting of muscles by a general look, we can see patient if he or she is tall or short, like in Marfan syndrome patients. Usually they are very tall, and gigantism patients are tall. In short
stretcher, like in growth hormone deficiency. So there are many other causes, malabsorption. Always observe when the patient walks into your room. Hydration, especially in case of children, you should assess the hydration. If patient is dehydrated mildly, it means 2.5 liter is deficient. So the signs are mild thirst, dry mucous membrane, concentrated urine only. In case of moderate, 4 liter is deficient. With the above signs, reduced skin turgor, tachycardia, they are also present here. In case of severe dehydration, 6 liter is lost, and great thirst, reduced skin turgor with decreased eyeball pressure. Veins are collapsed, sunken eyes, postal hypotension, oliguria, all these are the signs of severe dehydration. So hydration should be assessed as a part of general physical examination. Then the face, as I have told you, if you want to start from the hand, you can do it. If you can start from head and neck, just look at the face. Specific diagnosis can be made by just looking at a patient's face. Special faces, they are typical of certain diseases like acromegaly, Cushing syndrome, Down syndrome, Hippocratic, Marfanoid faces, myxedema, thyrotoxic Parkinsonism. Some pictures are there. We can see the patient with acromegaly, with protruded jaw, closing of these eye ridges. These are the acromegalic hands. Down syndrome patient, Cushing syndrome, thyrotoxicosis, myxedema. So these are the typical faces. By a simple, just at one glance, you can make your diagnosis. Then another important thing is jaundice. If the patient is more jaundiced, it becomes obvious by looking at the skin of the patient even. But mildly jaundiced patient, we have to specially for jaundice, especially the sclera. Jaundice is the yellow discoloration of patient's skin and sclera that results from hyperbilirubinemia. It happens when the bilirubin level rises twice above the normal level. It is deposited in tissues of the body that contain elastic. Jaundice is obvious from his eyes. Another main area to see for jaundice is under surface of the tongue, which is more sensitive than sclera as well. But traditionally we are looking for sclera, but under surface of the tongue is more sensitive than sclera as well. Again, cyanosis, bluish discoloration of skin and mucous membrane, is due to presence of deoxygenated hemoglobin in superficial blood vessels. Cyanosis occurs when there is more than 50 grams per liter of deoxygenated blood, means 5 milligrams per deciliter. Deoxygenated hemoglobin in the capillary blood. Two types of cyanosis are there, central and peripheral. Central cyanosis, the normal amount of deoxygenated in the arteries and a bluish discoloration present in parts of the body with good circulation, for example, tongue. And the peripheral occurs when blood supply to a particular part of body is reduced, for example, lips in cold weathers where the tongue is swelled. Peripheral cyanosis.
Causes of cyanosis are central causes, decreased arterial oxygen saturation in high altitude, multiple lung diseases, in cardiac diseases with right to left cardiac shunt, polycythemia, hemoglobin abnormalities like methemoglobin, sulfhemoglobinemia, and peripheral causes are all the causes of central plus expired to core, reduced cardiac output, left ventricular failure, shock, arterial or venous obstruction as well. The third sign is pallor. Pallor again, it has two causes. Number one is due to hemoglobin deficiency, or another is due to shock. Shock, in case of shock, patient becomes cold, clammy, hypotensive, but in case of anemia, we can notice just the pallor. If the hemoglobin is less than 7, then it is very severe anemia. So, anemia has many causes. I don't think to mention here, but the major are the microcytic anemia, as in iron deficiency, thalassemia minor, cerebroblastic, long-standing anemia of chronic blood loss, and macrocytic are megaloblastic, vitamin B12 deficiency, pernicious, gastrectomy, ileal disease, and poor diet. Folate deficiency, another cause of megaloblastic anemia, where the dietary deficiency in alcoholics, malabsorption, increased cell turnover in pregnancy. This is somewhat, this is a cause we have seen many times in our practice as well. So pregnant women should be supplemented with folic acid because of the increased cell turnover. We have seen many patients with megaloblastic anemia, and they are coming with thrombocytopenia as well. So ultimately, this folate deficiency is there. Like other drugs, antifolate drugs, phenytoin, methotrexate, sulfasalazine, when we are giving these drugs, then folic acid must be given. Normochromic anemia. Then we come to the oral cavity. In the oral cavity, we can see the teeth, breath, oral cavity for mouth ulcers like aphthous ulcers due to many drugs, trauma, gastrointestinal diseases like inflammatory bowel disease, celiac disease. They can cause mouth ulcers as well, and rheumatological diseases like Behcet syndrome, Ritter syndrome, and skin diseases like erythema multiforme, and infections, herpes, simplex, zoster, syphilis, tuberculosis. They all can produce mouth ulcers. These are the aphthous ulcers. This is a big ulcer, deep ulcer, occurs in Behcet syndrome. As Behcet syndrome, we all know about the Behcet syndrome. Usually, the ulcers are in oral cavity and in the genital along with joint pain and many other. This is a systemic disease, so other systems like eye involvement is also there, neurological involvement can be there. Gum hypertrophy, there are many causes of gum hypertrophy, especially in case of medicines. Phenytoin is notorious for gum hypertrophy, and sometimes in normal pregnancy it can happen as well. And vitamin C deficiency can induce gum hypertrophy, swollen gums, spongy bleed, the gums can bleed easily as well. Gingivitis, smoking, leukemia. This is a picture of gum hypertrophy. Pigmentation in the mouth, again,
heavy metals like lead, bismuth, iron, hemochromatosis, there is blue-gray pigmentation in heart palate. Some drugs like antimalarials or contraceptive pills, they can induce pigmentation anywhere in the mouth. In case of Addison's disease, there can be hyperpigmentation, Peutz-Jeghers syndrome, and malignant melanoma. These are the pigmentations in the side, you can see. In the scalp, we can look at the hair also, alopecia, non-scarring alopecia is alopecia areata, scalp ringworm, traction alopecia, scarring, burns, radiation. This is alopecia areata in a localized area just. And this is traction alopecia. And this is alopecia totalis. After examining the head, eyes, oral cavity, we should look at the nose as well. Obviously, if any obvious deformity in the nose, any nodules at the nares as well in case of sarcoidosis. So after nose, when we look at the mouth, the lips and inner mouth, we have seen hyperpigmentation, ulcers and many things. We should look at the tonsils as well. And then we come to the neck. In the neck, two main things usually we are looking for. One is lymphadenopathy, another is goiter. But other, any lump, we should look for any lump also, any obvious pulsation also in case of aortic diseases, dancing carotids like this, any pulsation, any scar mark. So in case of lymphadenopathy, during palpation of lymph nodes, the following features should be considered. One is sight, another, if they are localized or generalized, palpable lymph node areas are epitrochlear, axillary, cervical, occipital, supraclavicular, para-aortic, inguinal, and popliteal as well. Size of lymph node is very important, as we know that the axillary lymph nodes, if they are 1 centimeter or less, then they can be normal. If more than 1 centimeter, then we can say that there is lymphadenopathy in case of axillary. In case of cervical, 0.5 centimeter. If less than 0.5 centimeter, they are not abnormal usually. So the consistency is very important. They are hard in case of malignancy, they are rubbery in case of lymphoma and tuberculosis as well. So also soft may be normal. Tenderness is also important. Acute infection or inflammation can induce tenderness as well. The fixation, if they are fixed to the underlying structures, most likely malignant. So overlying skin also, if inflamed, then it is suggestive of infection. It either suggests carcinoma. These are the lymph node areas. I will demonstrate how to check the lymph nodes. Their lymph node examination is very important. Cervical lymphadenopathy patient, you can see there. The causes of lymphadenopathy, generalized causes are lymphoma, leukemia, multiple infections in case of viral infectious mononucleosis, cytomegalovirus, HIV, in case of bacterial tuberculosis, syphilis, in case of protozoal toxoplasmosis, in case of connective tissue disease, sarcoidosis. Some drugs can induce lymphadenopathy as well. The most common is phenytoin. Localized
due to local acute infection. Metastasis from carcinoma or other solid tumor, they can induce lymphadenopathy on the same drained area. Lymphoma, especially Hodgkin's disease, can be localized in one site in stage 1. Then we can come to the hand. In case of hand, nails, they are much important part of examination. They can give many clues for the diagnosis, like clubbing, increase in soft tissue of the distal part of the fingers or toes, first degree, second degree, and third degree clubbing. Yes, you know, the causes of clubbing are in case of cardiovascular, cyanotic congenital heart disease, infective endocarditis. Respiratory causes are lung carcinoma, bronchiectasis, lung abscess, empyema, lung fibrosis, and in case of gastrointestinal diseases, cirrhosis, in the very few cases of IBS and celiac disease as well. Thyrotoxicosis, we all know that is 30-degree clubbing. And one cause of clubbing is also familial. If there is family history of clubbing, then it's open only to explore. This clubbing we can see here. This 30-degree clubbing. Nails, blue nails in case of cyanosis and Wilson's disease. In case of Wilson's disease, usually blue half moon nails. Blue half moon nails, they can happen in Wilson's disease. Only blue nails are in cyanosis. And in case of red nails, polycythemia and carbon monoxide poisoning. Yellow nail syndrome, splinter hemorrhages, infective endocarditis and vasculitis. Pyelonephria, we know that iron deficiency anemia, fungal infections, Raynaud's, they can induce pyelonephria as well. Onycholitis in case of psoriasis and thyrotoxicosis, leukonychia due to hypoalbuminemia of any cause, not only due to renal failure. Any cause of hypoalbuminemia can induce leukonychia. Nail fold erythema in case of SLE, teres nails in cirrhosis, CRA. This is a case of Lamar-Wilson syndrome where pyelonephria is there. Thank you very much. Now I would like to demonstrate on the patient. Another one, some things I have left. उसमें आपने जो ना उसके सराउंडिंग्स में देखना है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, जैसे वॉकिंग एड है, स्टिक है, वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर ओपीडी में आता है तो जस्ट जब पेशेंट एंटर होता है उसी टाइम से आप उसको देख रहे हैं, उसका गेट कैसा है सबसे पहले। गेट से ही आपको जो ना वो हेमिप्लेजिक गेट, दूसरी चीज़ें, उससे आपको पता चल जाता है वहाँ से तो नहीं है। एग्जैक्टली, तो नहीं है। दूसरा उसके जनरल अपीयरेंस आप देख लेते हैं, ओरिएंटेशन उसकी आपको अंदाज़ा होता है कि पेशेंट जो है ना वो डिसओरिएंटेड कॉन्शियस है या नहीं है। फिर सबसे पहले जो है ना ओपीडी में आए पेशेंट हैंड शेक करता है। हैंड शेक से आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाता है, उधर से ही आप पल्स एग्जैक्टली। हैंड शेक में जो है ना उसमें एक तो आप सोशली आपका कॉन्टेक्ट बड़ा बेहतर होता है पेशेंट के साथ। पेशेंट ईजी फील करता है जब आप एक रेपो बन जाता है आपका पेशेंट के साथ। उसके अलावा फिर आप हैंड के ऊपर भी आपको आप देख रहे होते हैं कि हाँ, और बहुत सारे उसमें जो ना आपने ये भी देखना है कि कईयों में राइट हैंड नहीं होता। आपने राइट हैंड, अगर राइट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड है तो आपने हैंड शेक नहीं करना। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड नहीं, ये स्पेशली बुक के अंदर लिखा हुआ है कि उसमें पेशेंट एम्ब्रेस फील करता है। पेशेंट एम्ब्रेस फील करता है उसको जो ना वो ऑलरेडी, हाँ, इसीलिए जो ना कहता है अगर लेफ्ट राइट हैंड नहीं है तो आप हैंड शेक ना करें। अच्छा, बाकी हैंड शेक के दौरान में आपको बहुत सारे क्लीव्स डायग्नोसिस भी मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात जैसे डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका है, कंडीशन है,
डिस्ट्रोफी और मायोटोनी का मेरा ख्याल ऑर्थोपेडिक या ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो आपका हाथ छोड़ेगा ही, हैंडशेक के बाद आपको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, उसको वो डिस्ट्रोफिया हो जाता है, मायोटोनस हो जाता है ऐसे। और उसके बाद फिर मैं तो इजी होता हूँ जो ना हैंड से एग्जामिन करने का, जहाँ लुक के बाद जो ना फिर हैंड से एग्जामिन करना बड़ा इजी होता है। हैंड से फिर ग्रेजुअली आप फिर जो ना पूरा हेड एंड नेक पे, फिर उसके बाद फिर चेस्ट, फिर जो है वो लेग्स पे। तो क्लबिंग सबसे पहले जो ना हम ये नेल्स देखते होते हैं। हैंडशेक के साथ दो चीज़ों का इनिशियली आपको पता है, एक तो स्वेटिंग है ना, यस, वार्मनेस और कोल्ड, नॉर्मली वार्म है, नॉर्मली कोल्ड है, स्वेट है नहीं, बिल्कुल कोल्ड होने भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर जब आप नेल्स पे देखते हैं तो अभी हमने जिक्र किया कि नेल्स में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ब्रिटल नेल्स अगर किसी के हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा जो है ना उसको प्रोराइटिस है, जाके जो है वो नेल्स जो है ना ब्रिटल हो जाते हैं। उसके अलावा जो है नेल्स में जैसे अभी हमने देखा कि क्वाइलोनिकिया, ल्यूकोनिकिया, इसी तरह जो है ना वो बीज लाइन जिसको कहते हैं, इसी तरह येलो नेल्स तो नहीं है, स्प्लिंटर हेमरेजिस तो नहीं है, मतलब नेल्स में सारी चीज़ें, उसके पिट्स तो नहीं है जैसे सोराइसिस में पिट्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें नेल्स के ज़रिए से पता चल जाती हैं। फिर क्लबिंग हम देख लेते होते हैं। अब क्लबिंग के लिए जो ना फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, अगर ऑब्वियसली यूँ करके हम देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये जो इसी लाइन पे कि आपकी जो ना उसमें आपको एंगल विद द एक्सपीरियंस तो हमें वैसे ही अभी पता चल जाता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए हम कहते हैं कि आप जो है ना क्लबिंग को हमेशा से ये एंगल यूँ करके देखें। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, हाँ, लेकिन वो जो बिगिनर्स के लिए जो ना ये इजी तरीका होता है कि ये दोनों जब नेल्स को यूँ करते हैं तो नॉर्मली ये जिस तरह गैप होता है वो क्लबिंग में ये ख़त्म हो जाता होता है, अंदर जो सुराख सा नजर आता होता है। तो लेकिन आई डोंट थिंक कंसल्टेंट्स के लिए तो बस उसकी कोई नीड नहीं है, जस्ट आप इसी लेवल पे करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्लबिंग है या नहीं। फिर अगर है तो उसमें आप फ्लक्चुएशन भी चेक करते होते हैं। फ्लक्चुएशन चेक करने का ये तरीका है कि आपने दोनों हैंड थम्स नीचे रखे, इधर से इसको फिक्स कर दिया आपने और इससे ऐसे दबा के देखते होते हैं, यहाँ से दबाते हैं, फ्लक्चुएशन हो तो वो आपकी पुश अप हो जाती है, ये जो ना क्लबिंग के लिए है। और उसके साथ जो है आपने यहाँ पे पाम में देख लिया, पामर एरिथीमा वगैरह कोई तो नहीं है, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर में होता है। डुपिट्रेंस कॉन्ट्रेक्चर जो है सिरोसिस ऑफ लीवर के अलावा जो है अल्कोहलिक्स में होता है, मैनुअल वर्कर्स हैं जैसे आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसमें ये जो फेशिया है ये थिकन हो जाती है और जो ना रिंग फिंगर और फिफ्थ फिंगर ये फ्लेक्स हो जाते होते हैं, ये डुपिट्रेंस कॉन्ट्रेक्चर में होता है। उसके अलावा फिर आप ऑस्लर नोट्स यहाँ पे देखते होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, गोशर्स नोट्स, हेमर्टन्स नोट्स आप देखते होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में। फिर जो ना कोई रेशेस वगैरह जैसे जेनुएलियम्स होती हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। उसके बाद फिर हम जब आ जाते हैं ऑब्वियस डिफार्मिटी, फिंगर्स की कोई डिफार्मिटी तो नहीं है, जैसे रिमोटाइड हैंड तो नहीं है, आर्थराइटिस की डिफार्मिटीज तो नहीं है, वो चीज़ें हम देखते हैं। फिर साथ ही हम पल्स देखते होते हैं। पल्स एक तो आपने वाइटल्स में देखने चाहिए, वाइटल्स के अलावा भी आपने पल्स जो है उसका करेक्टर आपने देखना है, रेगुलर है नहीं है, वो आपने चीज़ें वॉल्यूम आपने एसेस करना है पल्स। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपने फिर रिमोटाइड नोड्यूल्स वगैरह तो नहीं है, वो भी आपने चेक किए, यहाँ पे रिमोटाइड नोड्यूल हो सकते हैं। और उसके बाद जो है ना यहीं से आप जो है एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड को यहीं से देख सकते हैं, बजाय बाद में फिर आना मुश्किल हो जाता है। तो एपिट्रोक्लियर का एक तरीका ये है कि आपने राइट जो एपिट्रोक्लियर को आपने राइट से देखना है आपने, उसके लिए जो ना ये इससे आपने यूं पकड़ लिया रिस्ट को, आपने इसको 90 डिग्री पे लाना है और ये जो इससे सहारा देना है, जो थंब है इससे यहाँ पे आपने पल्पेट करना है। ये एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड को देखने का तरीका होता है। इसी तरह जो है ना दूसरे में भी आपने एपिट्रोक्लियर को सेम यहाँ पे आपने इसको यूं करके ये एपिट्रोक्लियर को आपने इस तरह से देखना है, लेफ्ट को लेफ्ट से देखना है, राइट को राइट से देखना है। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर आप ऑब्वियसली आप इंस्पेक्शन में ही देखते हैं कोई इसी दौरान ये आपसे हिस्ट्री भी रहते हैं, आपको
यस आप टाइम बचाने के लिए आप हिस्ट्री के साथ आप कर रहे हैं, आपके तो आप हमें समझा रहे हैं। बिल्कुल पेशेंट से साथ हिस्ट्री आपने शुरू कर दी साथ यस टाइम सेव करने के लिए। तो कोई एल्बो में भी आप देख रहे हैं कोई एबनॉर्मेलिटी, और इसी तरह शोल्डर में आपने ऑब्वियस कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अगर ऑब्वियस है तो फिर उसको डिटेल हम एग्जामिन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई नहीं है। फिर हम आ जाते हैं उसमें जो है ना, सबसे पहले हम ऊपर से ही शुरू करते हैं, हेड पे हम देखते हैं अगर कोई एलोपेशिया जैसे हमने जिक्र किया स्पेशली अगर है तो फिर हम उसको वो कर रहे होते हैं। फिर फेस को हम लुक हम देखते होते हैं कि कोई टिपिकल फेस जैसे हमने देखा इस तरह की कोई फेस तो नहीं है, कोई प्रोट्रूजन ये जो इनकी तो नहीं है फोरहेड की। और फिर हम आइस में देखते होते हैं पैदर को अजब चकित इस पैदर के लिए फुल आपने कंजंक्टिवा देखने होते हैं और आप करा के फिर जॉन्डिस को जो है ना डे लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ ये है कि डे लाइट क्लिनिक हमारा इस तरह का होना चाहिए कि उसमें डे लाइट आनी चाहिए, इसमें जॉन्डिस मिस हो सकता है। कितने चुके थे अच्छा। फिर आइस रेड आई तो नहीं है, वो भी हम साथ साथ देख सकते हैं, कोई कंजंक्टिवाइटिस वगैरह और स्ट्रैबिस्मस वगैरह तो नहीं है, वो हम देख सकते हैं इसमें। और साथ में आप प्यूपिल्स देख सकते हैं, टार्च हमारे पास होनी चाहिए, प्यूपिल्स हम देख लें। प्यूपिल के अंदर बहुत सारे हमें जो है ना क्ल्यूज मिल जाते हैं, जैसे जो है अगर एक साइड का प्यूपिल आपका जो है वो मियोसिस है, दूसरे साइड पे नहीं है, तो फिर आपने पूरा जो है ना हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं उसको, उसके लिए फिर आपने देखना है। ये मेहताब साहब, ये जो अगर आई के मखसूस सारी चीज़ें तो तब ही देखेंगे जब आई कंप्लेंट के साथ है। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप हिस्ट्री किसी और चीज़, अभी तो जीबी में आपने आई में जॉन्डिस देखना है, एनीमिया देखना है, मोटी चीज़ें तो यही है ना कि हम लेकिन सर अगर प्यूपिल आपको आ रहा है ना, नहीं, अगर आपको प्यूपिल मिल जाए, प्यूपिल साइज आपने जीपी का एक हिस्सा है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ही आपने प्यूपिल देखना है। अगर प्यूपिल दोनों साइज इक्वल है तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर एक साइज आपको कम लग रहा है ना तो इस आपको डायग्नोस के लिए बहुत बड़ा क्लू मिल रहा है कि उसको जो ना, इसका मतलब ये हार्नर सिंड्रोम तो नहीं है, तो फिर हार्नर सिंड्रोम की खास हम देखेंगे कि ये सिंपथेटिक जो ट्रंक है ये कहाँ पे इसके ऑब्स्ट्रक्शन है। बिल्कुल, तो वो प्यूपिल आपने देखना, वो उसी का हिस्सा है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फेस के ऊपर। फेस में हम देखते हैं कोई जो है ना वो बटरफ्लाई रेश वगैरह तो नहीं है जैसे एसएलई में होती है। हाँ, इसी तरह नेजल डिफॉर्मिटीज हम देखते होते हैं, और ये जो नेरीज है इनमें नोड्यूल्स तो नहीं है। सर्काइडोसिस में यूजुअली यहाँ पे नोड्यूल्स बने होते हैं। फिर ईयर्स भी एग्जामिनेशन का एक पार्ट है। ईयर्स में बस ऑब्वियस हमने देखना है कि ईयर में ऐसी कोई चीज़ नहीं, जैसे वेजिकल्स वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, वो हमने देखने होते हैं। और उसके बाद जो है ना हम ओरल माउथ पे आ जाते होते हैं, तो यहाँ पे हम लिप्स सबसे पहले देखते होते हैं, जैसे जो है ना स्टोमाटाइटिस वगैरह तो नहीं है, किलोसिस वगैरह तो नहीं है, लिप्स क्रैकिंग वगैरह तो नहीं है, ब्लूइश लिप्स तो नहीं है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर ओरल कैविटी पे हम जाते होते हैं। अच्छा, ध्वनि पुष्ट, हाँ, हमने टीथ गम्स हाइपरट्रोफी हम देख लिया, टीथ हाइजीन देख लिया। कुछ स्पेशल टीथ होते हैं जैसे हुचिनसन टीथ कहते हैं, सिफिलिस के अंदर जो है ना, हाँ, जो वो हमने देखने हैं। फिर जो ना जिब्द रूटी खिलत, टंग हमने देखनी है, स्पेशली टंग के अंदर फेसिकुलेशंस तो नहीं है। टंग जो है ना वो उसकी शेप हमने देखनी है, और उसके जो ना वो क्या कहते हैं ग्लोसाइटिस वगैरह तो नहीं है, वो देखना है। और फिर ओरल कैविटी में पिगमेंटेशन जैसे हमने चेक की वो देखने हैं। फिर जो है ना पीछे टॉन्सिल्स वगैरह भी देखने हैं। उसके बाद जो हम नेक पे आ जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन जो है ना वो नेक का, उसमें ऑब्वियस पहले देखने के लिए क्योंकि गिरीठे थरूट, तो हम गाइडर जो है ना एसेस करते होते हैं रूटीन एग्जामिनेशन में भी। और साथ ही हम जो है ना कोई ऑब्वियस लम्प तो नहीं है, ऊपर से वो देख लिया। फिर हम लिम्फेडिनोपैथी देखते होते हैं। लिम्फेडिनोपैथी का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हाँ बैक से हम जो है ना, अच्छा यहाँ पे सबमेंटल हम देख रहे होते हैं यूँ करके, ये सबमेंटल हमने लिम्फ नोड देख लिए। फिर जो है ना एक साइड से पहले प्रेस करना
सबमिट तो आप दोनों से कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है एक साइड से पहले फिर बाद में दूसरी साइड से करना, एट ए टाइम दोनों नहीं करना है। तो यहाँ पे जो ना ये आपने देख लिए, और यहाँ पे सबमैंडिबुलर जो ना अच्छा पल्प से आपने एक तो जो ना इस लिम्फ नोड देखने का तरीका ये है कि ए से आपने रोटेटरी मूवमेंट, पल्प को रोटेटरी मूवमेंट देनी है, यूं करके दबा के नहीं देखना है। यूजुअली जब हम स्टूडेंट हैं तो हम यही करते थे, ऐसे दबा के देखते थे कि ये लिम्फ नोड है तो दबाने से हमारे हाथ में, दबाने से हाथ नहीं आते, वो अंदर की तरफ प्रेस हो जाता है। इसीलिए जो ना हमें ऐसे जो है ना ऐसे रोटेटरी पल्प से एक रोटेटरी मोमेंट देके देखना है। इसी तरह जो है ना लेफ्ट सबमैंडिबुलर पे भी यूं करके आपने देखना है। फिर आपने यहाँ पे ये प्री आर्टिकुलर देखना है। हाँ, इसी तरह जो है ना आपने पोस्ट आर्टिकुलर आप आगे से देखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पे प्री आर्टिकुलर ऐसे देख के फिर आप जो है ना इधर एंटीरियर सर्वाइकल में जाते हैं। एंटीरियर सर्वाइकल पे भी हमने वही जो है ना रोटेटरी मूवमेंट देनी है। जैसे इसके लिए लिम्फ नोड के लिए थोड़ा सा आपको डीप जाकर देखना पड़ता है, और स्पेशली सर्जिकल पीपल के लिए ये मेडिसिन में राइट नहीं है, लेकिन इसके लिए लिम्फ नोड देखना बहुत ज़रूरी है। फीमेल पेशेंट के अंदर स्पेशली जो है ना ये जो है ना इंटीरियर सर्वाइकल और सुप्राक्लेविकुलर ये भी आपने देखना है। इसी तरह इस साइड पे भी इंटीरियर सर्वाइकल, सुप्राक्लेविकुलर और स्केलियन ऐसे डील करके। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर आपने फ्रंट पे जाके यहाँ पे ये आपने ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स देखने हैं। फिर आपने पोस्ट आरिकुलर लिम्फ नोड्स यहाँ पे ऐसे पोस्ट आरिकुलर लिम्फ नोड्स देखने हैं यूँ करके, और फिर पोस्टीरियर सर्वाइकल सेम उसी तरीके से ये पोस्टीरियर सर्वाइकल के लिए ये। अच्छा, इसके बाद फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड, साथ ही बेहतर होगा कि इसके साथ ही हम लिम्फ नोड को एक पूरा देखें। तो जब सर्वाइकल देख रहे हैं तो एक्सिलरी के लिए ये है कि आपने जो पेशेंट की राइट एक्सिला को लेफ्ट हैंड से देखना है अपने, और लेफ्ट को राइट से देखना है, चला वाइस वर्सा। हाँ, तो इसमें भी दो तरीके हैं, लेकिन जो इजी तरीका है उसका ये है कि आप उसके शोल्डर पे हैंड रखें और इसको अपने ऊपर रेस्ट करा दें, रिलैक्स करा दें, तो ये फुली जो है ना आपकी एक्सिला आपको हो जाती है और पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। तो उसमें आप फिर जब यहाँ से पूरी तरह जो है ना रूटीन में देखनी चाहिए, लेकिन आउटस्ट्रेच्ड हैंड में ट्रेमर लाजमी देखनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, फिर एक्सिलरी के लिए जो जैसे मैंने कहा कि यूं करके आपने, और इससे ये जो आपकी फिंगर के ऊपर जो टिप्स है ना, ये पूरी ऐसे ऊपर तक जानी चाहिए, इसकी छत तक। वहाँ से आप जो है ना ऐसे उसके साथ में यूं करके लेके आते हैं, तो ऊपर जो आपके लिम्फ नोड है वो भी सेंट्रल जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, इसके साथ ही आप इसी हैंड से एंटीरियर वाल भी और साथ आपने पोस्टीरियर वाल भी इसी से ही आप देख सकते हैं। लेटरल के लिए आप अलग से यूं भी देख सकते हैं। ये इसी तरह से जो है ना इसमें हमने करना है। जो इंग्वाइनल है ना, इसके लिए हमने लेटा के देखना है। तो इंग्वाइनल के लिए जो है ना ये क्रेस्ट को हम सबसे पहले पाल्पेट करते हैं, फिर प्यूबिक बोन को, उसके जस्ट जो है ना लेटरल 2/3 मीडियल 1/3 इसी जंक्शन पे आपने सबसे पहले जो है ना वर्टिकली आप देखें यूं करके यहाँ तक, फिर आप हॉरिजॉन्टल करें। तो इसके दो ही ग्रुप्स हैं, वर्टिकल ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स। वर्टिकली आपने ऐसे हर उसी तरह से रोटेटरी मोमेंट पे ही देखना है आपको। ये इंग्वाइनल के बाद जो है ना वो ब्रीटियल भी देख सकते हैं। और ब्रीटियल में लेस देन 45 यहाँ करके बस जैसे आप पल्स देखते हैं सेम उसी तरह से ही आपको ब्रीटियल पल्स की तरह आप लिम्फ नोड भी ऐसे पल्स देखते हैं। ये जो है लिम्फ नोड्स हमने देख लिए। फिर गाइटर अगर है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम फिर गाइटर के फर्दर भी पूरा वो देखेंगे। अगर गाइटर नहीं है तो फिर उस तरह की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं चेस्ट के ऊपर। चेस्ट में जो है कोई मेल पेशेंट में गायनेकोमेस्ट्री हमने देखना है। फीमेल पेशेंट में फुल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज द पार्ट ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। यस, सर ये लिखा हुआ है बुक में।
बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको निकोलस टेडी और मैक्लोर्स दोनों में लिखा हुआ है। किसी बुक में नहीं लिखा सर, दोनों में लिखा हुआ है। निकोलस टेडी और मैक्लोर्स जो है ये मेथड्स की बुक्स हैं, उन दोनों में ये लिखा हुआ है कि जब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, क्यों करना है ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं ऐसे सर्जन जो है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना पेशेंट को भी नोटिस नहीं होता है, मिस कर सकता है पेशेंट। फीमेल आजकल तो मोबाइल में भी आता होता है कि खुद अपनी स्क्रीनिंग करें करके जो इतना जोर देते होते हैं, तो इसीलिए फिर ऐसे डॉक्टर जो ना जब फिजिकल के अंदर जो है ये एग्जामिनेशन आता होता है, ज़ाहिर हमारे एक सेटअप में तो नहीं है, लेकिन ये देखते हैं चीज़ें पाल्पेशन वगैरह वो सिस्टेमिक में आ जाता है, उसमें आप नहीं देखते होते। फिर आप जो है ना वो लोअर लिम्ब में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपने ओपीडी का पेशेंट है तो आपने ओडीमा देखना है मस्ट। इसी तरह जो है ना वो पूरे फीट वगैरह आप देखें, जिस तरह आपने हैंड एग्जामिनेशन किया सेम जो है ना वो फीट के अंदर भी एग्जामिन करना है। और आपने इंस्पेक्शन में ये जो है ना बिल्कुल ओडीमा के अलावा भी हमने देखना है कि इसमें बाज़ हाइपरट्रोफी वगैरह तो नहीं है, डीवीडी वगैरह तो नहीं है, हाँ वो रेसिस वगैरह, मतलब जैसे हमने अपर लिम्ब को एग्जामिन किया सेम जो है लोअर लिम्ब की एग्जामिनेशन बिल्कुल सेम उसके साथ, या डिफार्मिटी तो नहीं है, वेरियस डिफार्मिटी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। थैंक यू वेरी मच।